जो अनिल जो गया था उसको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि वो 30 फुट गहरा है, और रात के टाइम में वो क्या था उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा था। वो एकदम काम करते करते नीचे गिरेगा जाके। मैं वहाँ देखने गई थी, थोड़ी देर आगे बढ़ी तो कह रहा आदमी गटर में गिर गया। मेरे बाबू के जूते मिल गए और वो कपड़े कुछ नहीं मिले थे। तो मुंह के रास्ते इसके अंदर जो भी वहाँ घुटने तक स्लस था वो सारा मुंह के अंदर गया। 2 बार उल्टियाँ भी कई 2-3 बार इसने। उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ml कीचड़ मिला इसके पेट में। बहुत बहनों के पति मर चुके, उनके लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए जो किसी के पति किसी के बच्चे ना मरे। It is dangerous. It is banned by law. It is dehumanizing. It takes away lives. Yet it persists. Since 2017, one person has died every 5 days cleaning septic tanks and sewers across the country. 6 such deaths took place in the month of September alone in 2 separate incidents in New Delhi. National capital of the country, New Delhi. Life here moves at a breakneck speed. It epitomizes progress, development. Fast-moving cars throng the roads. High-rise buildings adorn the skyline. But in the dark underbelly of the capital, there are those who clean the filth that runs beneath the glitz of the fast-paced life of a metropolis. On September 9th, 5 young men, Raja, Sarfraz, Pankaj, Umesh and Vishal, lost their lives while cleaning a septic tank in a posh residential complex in Motinagar, an area in West Delhi. They were not wearing any protective gear. They had no masks and were without any professional equipment. They were cleaning a 30 feet deep septic tank, a chamber full of deadly poisonous gases and grime. 20-year-old Vishal was one of the 5 men who died of asphyxiation in that toxic chamber. मैम वहाँ पे 3 टैंक हैं, 20 से 25 फीट गहरे हैं और तीनों के लिए एक सिंगल सीढ़ी यूज़ होनी है। तीनों टैंक में एक सीढ़ी का यूज़ होना है। उसमें दम घुटे तो भी कोई वापस ऊपर आ नहीं सकता है। ना मास्क प्रोवाइड किए हैं, ना बूट्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ना ग्लव्स, कुछ भी नहीं। In 2013, Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act acknowledged the urgency of rehabilitating manual scavengers. It prohibits the engagement or employment of anyone as a manual scavenger or employed for hazardous cleaning of sewer or a septic tank. Violations could result in a year's imprisonment or a fine of 50,000 rupees, and offences under the Act are non-bailable. But despite the laws being in place, manual scavenging continues. The person entering into the sewer line, I am not looking one person coming and entering into the sewer line. I am looking that into the, it is a constitutional guaranteed the right to life with the dignity is getting violated. So the states and the central government must take that as an important and as a cognizance, and they have to go to the court. Instead of they go to the court on behalf of the scavengers, they themselves are employing. This is an irony in the whole democratic system. 20-year-old Vishal usually spent his Sunday playing cricket with friends from his locality. But then it was a Sunday when Vishal got called to work and never returned. जहरीली गैसों के इनहेल की थी इन्होंने, जहरीली गैस इनहेल की थी, उसकी वजह से सांस ले नहीं पा रहे थे। वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। जब आप नाक से सांस नहीं ले सकते, आप मुंह खोल के सांस लोगे तो मुंह के रास्ते इसके अंदर
जो भी वहाँ घुटने तक स्लस था वो सारा मुंह के अंदर गया। 2 बार उल्टियाँ भी कई, 2-3 बार इसने। उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ml कीचड़ मिला इसके पेट में। Vishal and his 4 colleagues succumbed to the toxicity of a septic tank. But barely a few kilometers away, in another part of India's capital, 5 days after Vishal died, 37-year-old Anil lost his life cleaning a sewer in Dabri. वो अपनी मर्जी से गटर का काम करते थे। कह रहा रोज की झाड़ी मिल जाती है 200-250 कर खर्चा चल जाता है। मैंने काफ़ी मना करी, मानते ही नहीं थे। मैंने कोई नौकरी पकड़ लो, नौकरी भी मिली तो वो भी छूट गई। बैंक कंट्रोल में काम करते, वहाँ पर भी यही सीवर का मेरे से बगैर पूछे काम करते थे। Anil was well known in his locality as a sweeper cleaner who could be depended upon. Anil would single-handedly clean the sewer. The work fetched him around 300 rupees per job. The day he died, he was called to clean a clogged sewer. But the rope that he tied around his waist, and that was his only safety line, snapped that evening, plunging Anil into the 20 feet deep sewer and to his death. तो हाँ, लोगों ने कह रहे थे कि बहुत गहरा है और ये भी बता रहे थे कि तो 2-3 आदमी पहले भी कर चुके थे। वो 20 फुट 25 फुट बता रहे थे नीचे, रस्सी से पकड़ के नीचे उतरे वो। उन्होंने बोला कि रस्सी कमजोर है, मना उतरो। तो मैंने फिर उनके जूते देखे थे। मेरे पति कभी कपड़े पहन के काम नहीं करते, कपड़े निकाल के करते चड्डी में। उस दिन पैंट शर्ट में ही मिले थे, लिख रहे थे वहाँ से, जब गाड़ी वालों ने लिखा रहे गटर में से। In the Nangloi area of Delhi, Vishal's family is angry. They say that Vishal's job responsibility did not include cleaning the septic tank at the upmarket residential complex. Vishal's family accuses the company managing the complex of being callous to their situation. मेरा भाई तड़प के चला गया। ये तो सोचो, उसमें से जिस हालत में भी निकला वो, लेकिन वो 2-2.5 घंटे जिंदा तो था ना, उतने में तो इंसान बचा सकता है ना। बहुत कुछ हो सकता है, 2-2.5 घंटे कम नहीं होते हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, कंपनी वालों ने कोई फ़ोन नहीं किया और उन सबका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, कुछ भी नहीं आए। Vishal was the youngest in a family of 5 siblings, and the day he died, Vishal was also the only earning member of his family. Apart from his brother Angad, there are his 3 sisters and his ailing parents who now mourn his death. जब निकलने की, आने जाने की जगह नहीं है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्यों घुसा रहे हो? कोई बात है तो जिसके बेटे जाएंगे तो उसकी कीमत कोई चुकाएगा। बेटा तो जैसे भी अपने आँख के सामने है ना, औलाद से बढ़कर। हाँ, कंडीशन कुछ ख़राब थी। फादर को डायबिटीज़ है, आँखों से ब्लर दिखता है। तो उसने कहा भाई अभी आप तो कुछ करो मत, मैं ही करता हूँ। वही करता था जो करता था। अभी खैर सैलरी भी उसकी कुछ खास नहीं थी, बाकी हमारी जो सेविंग थी उससे भी कुछ चलता था हमारा। वो सबसे छोटा था और सबका ही दुलारा था, मम्मी का खास करके। आता था, जब भी घर में आता था हेलमेट लेके आता था, एक हाथ में चाबी घुमाता हुआ आता था। मम्मी को कहता था बुढ़िया तू टेंशन मत ले, मैं करूँगा, तेरे सारे सपने पूरे करूँगा, तू टेंशन मत ले। बहन को भी कहता था तेरी शादी मैं कराऊँगा, तू टेंशन मत लो, मैं कराऊँगा। बाकी हमारी आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी रिमोट के लिए, हंसी मजाक होता था। कई वादे भी किए थे उसने, मम्मी से भी किए थे, बहन से किए थे, सारे वादे टूट गए। Anil, who died a few days after Vishal, left behind Rani, the partner he was living with. She sits in her cramped room with her 3 children and a handful of donations, contemplating the life that she could have had. Anil and Rani were saving up to get married.
मैं अब मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, दबाने वाला नहीं है, अब मैं किसके सहारे से रहूँगी? क्योंकि मेरे बच्चे ये छोटे छोटे हैं, इनको कैसे पढ़ाई लिखाई खवाना पियाना मतलब इनकी समझ में कैसे कर पाऊँ? The toxic profession of manual scavenging has taken away thousands of lives and continues to do so. There are NGOs working in the field who say that nearly 1,000 manual scavengers have lost their lives in the past few years. And if the deaths in septic tanks are included, that number goes even higher. Manual scavenging is banned in the country by law, but everyone knows that it exists, not just in smaller towns, but across cities and across the biggest of metros. No, prosecution agencies in India is a completely just very weak, because particularly when it comes to the Dalits and marginalized, that is never going to work. So I can say that political will, if it is there, then the things will fall on the track. There is no political will. That is actually creates the whole problem. It is mandated that anyone who dies under circumstances that took Vishal and Anil's life, the government will pay them compensation. In the case of Anil, compensation may still not be paid out to Rani, as she is not a legal heir. But Vishal's family will get the mandated compensation of 10 lakh rupees. But then that price may not be enough to compensate for the young life that was cut short. Demeaning. हाथ से करते हैं हम, हाथ से करते हैं, ना कोई जूते ना कोई ग्लव्स, हाथ से करते हैं. Inhuman. मैं उतरा था एक बिल्डिंग में, पूरा ऐसा हो गया था जब से मैं बेकार ही हो गया, 1.5 साल हो गया आज. मैं उतर गया था, एकदम भपका सा आया, क्या हुआ, इतना गोली दवा सब बीमारी हो गया मेरी. Discriminating. परचूनों की दुकान पे वो जाते हैं हम सामान लेने, तो पैसे देते तो दूर से लेते हैं हाथ से. उस पैसे को भी पानी से धोके नहीं जब रखते हैं दुकानों में, वे बात बहुत करते हैं. हम जहाँ पर भी काम करने जाते हैं वहाँ पे हमें पानी जब भी मांगते हैं तो वो झूठे गिलास देते हैं, कोई अच्छा गिलास तो पकड़ाता ही नहीं, कहीं से निकाल के दराज में रखे हुए पुराने बहुत गिलास वो देते हैं. अगर बोतल दी उन्होंने पानी के लिए पीने के लिए तो बोलते भी बोतल भी अपने साथ ही ले जाओ. Manual scavenging is defined as the practice which involves cleaning of human excreta without any personal protective equipment. A practice that either relies on doing the work with one's bare hands or basic and often shoddy tools. As per the House Listing and Housing Census of 2011, there were 13,14,652 toilets where human excreta got flushed down open drains. 7,94,390 dry latrines where the human excreta was cleaned manually. While 73% of these are in the rural areas, 27% of them are also in urban localities. As per the socio-economic and caste census of 2011, there were 1,82,505 manual scavengers in the rural areas of the country alone. And the data, however, did not include railway employees who clean excrement from rail tracks. So when the people are cleaning, and you have to think how they will clean. Once you start thinking, then immediately you will understand that there should be the mechanization. Because you are not thinking them as citizens of this country, you also think that they are untouchables. If untouchables is cleaning, what wrong is there? They burn only to this. So that is if your impression, so you will never find any solution. That impression is still there in the country. So my demand is they must change their mindset. 36-year-old Y. Manikandan risks his life every day to put a meal on the plate for his family of 6. He is employed by a contractor to clean sewers and septic tanks in Vyasarpadi area in Tamil Nadu. He earns
360 rupees for the day that he finds work. Tamil Nadu has earned the dubious distinction of having the highest number of deaths of manual scavengers. 144 deaths have been recorded in the state since 1993. While the government claims of effective implementation of the Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013, many, like Manikandan, continue to do the odd jobs. வீட்டுக்கு வரும்போது எனக்கு 4 பொம்பளை பசங்க இருக்குது. பசங்கள்லாம் ஒரு நாத்தடிக்குது, மேலே ஸ்மெல்லாக இருக்குது, அவங்களுக்கே வாந்தி வர மாதிரி இருக்குதுன்னுவாங்க. உடனடியாக நான் என்ன பண்ணுவேன், வீட்டிலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி சோப் போட்டு லைஃபாய் சோப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை போட்டு குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும், உடம்பு அசதியாக இருக்கும். அப்படியே வந்து படுத்து அப்படியே தூங்குற மாதிரி இருக்கும். Despite being identified as a manual scavenger, the corporation is yet to rehabilitate Manikandan with other forms of employment. It has been seen that in cases where a person has been rehabilitated, the stigma and discrimination associated with manual scavenging lingers on. An estimated 62,000 million litres of sewage is generated in urban India every day. 70% of this sewage goes untreated. The urban spaces lack adequate sanitation. People who are employed to clean, unclog and do sanitation jobs are exposed to health hazards and risk to their lives. Sanitation workers exposed to the toxic environment say this is an occupational hazard. Tejpal had been cleaning sewage for 35 years in Pune's camp area. His meager income of a few thousand rupees makes it difficult for Tejpal to now seek medical help for the health issues he has started facing recently. अब बीमारी कीड़े रहते हैं उसमें, एकदम खांसी उठती है, एकदम धसका सा आता है, अभी शुगर भी हो गया था, टीबी भी हो गई थी, अभी सब ऐसे ही चल रहा है, शरीर में कुछ लगता ही नहीं है, जो कि वो गटर में हाथ दे बया, अंदर उतर जा बया, वो खांसता ही रह बया, हाथ थोड़ी पिला दे कंडोदार, चल उतर जा, उतर गया. Nobody want to take the risk for the life. When the life itself is under the risk, why somebody will say? Which means what? The scavengers who are entering are not getting or unable to get any other than that scavenging job in the outside the world. That is the problem of the whole our society and the system, where you are not including such community to come and be part of the society. Manual scavengers crawl into pits, enter sewers or climb down sewer tanks. As caste-based roles imposed by society do not leave them with alternate career options, they continue to be relegated to the bottom of the social hierarchy. Manual scavenging has been banned since 1993 by an Act of Parliament, and officially most of the states today deny the existence of manual scavenging. But it exists across India, and instead of using machines and technology, there are still human beings who are cleaning up other people's excreta. Everybody together, including the many engineers, scientists of this country, we must develop a kind of a apparatus or the machines or the whatever mechanized way of cleaning system, and we must release these people from this caste bandage. This bandage is not just recently, it is in thousands of the years of bandage. So that victimhood they should not carry in any democratic country. It is difficult to deny the gut-churning reality of manual scavenging. It is difficult to deny that Vishal and Anil and 1,000 other deaths happen because they have to go down sewage pipes and septic tanks, that they are flushed away by the indifference of their fellow human beings.